Good evening, friends. Good evening, friends. I think there was some issue in the app, so we are going live on YouTube. So, guys, we started with cost cost accounting accounting system, system, and and in last lecture, in last lecture we discussed that even though financial accounting and cost accounting, these two are branches of accounting only, but there are certain differences in these two. We talked about those differences in last lecture, and we understood that there cannot there be cannot just be a single set of records purely for financial, purely for costing. Either you have to maintain both in a combined manner, or you have to go for separate records. If separate records are maintained, we refer it as non-integrated system. And if combined records are maintained for both, we call it as integrated. So either it is non-integrated or it is integrated. Okay? Now, under non-integrated system, cost records are maintained separately, and because cost records are maintained separately. Just 1 minute, guys. There is some problem here. Voice. Just 2 minutes. Yes. Hello. Is it okay now, guys? Online students, please confirm. Is it okay now? Yes. So we started with non-integrated system, and we understood that under non-integrated system, because the cost records are maintained separately, various ledger accounts relating to cost records are maintained. Like we talked about stores ledger control account, we spoke about wages control account, we talked about factory overheads, WIP. Then we spoke about administration overheads, finished goods, selling and distribution overheads, cost of sales, costing profit and loss account, and very important, the accounts which we do not maintain under cost record but we need for double entry completion, like cash, bank, debtors, creditors, these accounts are not drawn, and for all of them a single control account is maintained called as cost or general ledger adjustment account. And that is control account for us. Where the second effect is to be completed through that account. कल हमने उसके journal entries सारे discuss किए. We are done with the journal entries, and even we solved one problem. एक problem भी हमने solve किया. So, in general idea you have now about how the entries are passed under non-integrated system. तो non-integrated system के entries क्या होते हैं ये आप सबको अभी general idea आ गई है. आज जब अपन और आगे प्रैक्टिस करेंगे तो you will have a better idea, better understanding of all these accounts as well as all these entries. Let's continue our practice. Come to page number 294. Problem number 2. The cost ledger of Alpha Limited showed the following balances as at 1st April 2020. Stores ledger account, work in progress account, finished goods account, works on cost account, administration on cost account, cost ledger control account,
Further balances resulting from the operations for the year ended 31st March 2021 were stores purchases, stores issued to production order, stores issued to works and repairs order, wages, productive labor, unproductive labor, carriage inwards, works on cost allocated to production order, works expenses, administration on cost allocation to production, goods finished during the year, finished goods sold, cost, sales expenses, sales during the year, prepare necessary accounts in cost ledger and a schedule of balances for the year ended 31st March 2021. शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस का मतलब ट्रायल बैलेंस. सो कल एक महीने के डिटेल्स दिए हुए थे अपने को अप्रैल 2021 के. आज 2020-21 पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स दिए. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट तो वही होने वाले, अमाउंट्स कम ज्यादा होते हैं. तो जो भी अकाउंट्स जरूरी है, रादर सारे अकाउंट जरूरी है, वो सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे. लेट्स ड्रॉ द अकाउंट्स. प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 294. In the books of Alpha Limited, stores ledger control account, stores ledger control account, six lines. Wages control account, five lines. Factory overheads account, five six lines. WIP control account,
WIP control account, then administration overheads account, five lines. Finished goods account, finished goods account, five, six lines. After finished goods account, selling expenses है ना, selling carriage inward का account नहीं बनता ना, it is directly added to the stores. Selling overheads account, cost of sales account, cost of sales account, sales account, after sales account, costing profit and loss account, costing P&L account, five, six lines.
And finally, guys, we need that control account. Cost ledger, adjustment, or general ledger adjustment account. Ten lines. Can I start? Cost ledger of Alpha Limited showed the following balances as at 1st April 2020. Stores ledger account. Go to stores ledger account to balance brought down. We discussed it yesterday also that stores can never have negative balance. One lakh 5,000. WIP account opening balance is, go to WIP account to balance brought down 78,400 rupees. Finished goods account to balance brought down 55,800. वर्क्स ऑन कॉस्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर का ये अंडर ओवर एब्सॉर्ब्ड कैरी फॉरवर्ड हुआ है. क्रेडिट बैलेंस है गाइस. क्रेडिट बैलेंस बोलता ओवर एब्सॉर्ब्ड है. अंडर एब्सॉर्ब्ड रहा तो डेबिट बैलेंस रहेगा. ओवर एब्सॉर्ब्ड है, एक्सपेंस कम हुआ बट एब्सॉर्ब ज्यादा हो गया, तो देयर इज क्रेडिट बैलेंस. गो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. Amount is 1,000. Administration cost. Go to the account. Under absorbed है, to balance brought down 600 rupees. $600. Cost ledger control. Go to last account. There is opening credit balance of 238,800. Buy balance brought down 238,800 rupees.
Further balances resulting from the operations for the year ended 31st March 2021 were, बंद हो गया वो प्रोजेक्टर, आ जाएगा थोड़ी देर में. मारो शिवा रहेगा उसको बोल तो मयूर सर को बता. Stores purchases. What is the entry for stores purchased? Stores ledger control account debit to cost ledger adjustment account. Go to, oh भाई उठ उठो तीनों भी. तू ही रे भाई, देख क्या रहा चश्मे वाले, उठो बोला तो समझ में नहीं आता कि तीनों, तू नहीं बीच वाला. हाँ खड़े रहो बेटा तीनों, तू भी रे हीरो. हाँ क्या आता है ये सब? आ जाना, एक 5 मिनट बात करके देखना, देखते जमता है क्या. तेरे पसंदीदा टॉपिक पे बात कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्टिंग नहीं. कम, लेट्स सी, कम कम, बी अ मैन, कम ऑन. What is the entry, guys, for goods purchased? Stores ledger control account debit to cost ledger adjustment account. Stores ledger control account debit side to cost ledger adjustment account. 3,60,000. Go to cost ledger adjustment account credit side by stores ledger control account. $3,60,000. 3,60,000. Stores issued to production order. WIP account debit to stores ledger control account. Go to WIP account to stores ledger control account. 3,93,000. Go to stores ledger control account by WIP control account. How much is transferred to WIP? 3,93,000. Stores issued to works and repair order. Where do you charge? Factory overheads. What is the entry? Factory overheads account debit to stores ledger control account by factory overheads. Amount is 15,000. 15,000. Factory overheads debit side to stores ledger control account. $15,000. Wages paid. What is the entry? Wages account debit to cost ledger adjustment account. Wages account debit side to cost ledger adjustment account. $6,15,000. 6,15,000 डायरेक्ट दिया है ना.
6,15,000 6,15,000 by wages control account 6,15,000. इसमें से डायरेक्ट प्रोडक्टिव लेबर कितना है? Where do you charge it? WIP. What is the entry? WIP account debit to wages account. $5,90,000. Wages control account credit side by ब्रैकेट प्रोडक्टिव लेबर कितना? 590. अनप्रोडक्टिव लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे. एंट्री बताओ. फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स. Amount is 25,000. Factory overheads debit side to wages control account 25,000. 25,000 आया. कैरेज इनवर्ड नहीं. Carriage inward is transportation cost incurred on purchase of goods. तो स्टोर्स पे किया गया खर्चा है. आज ही अपन AS2 में आज दोपहर में सिखाया अकाउंट्स में दैट इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स. इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होता है. इट विल बी डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर. इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा. व्हाट इज द एंट्री फॉर पेड? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू cost ledger adjustment account. Go to stores ledger control account debit side to cost ledger adjustment account bracket carriage inward. कितना बेटा? 6,000 है. Go to cost ledger adjustment account by stores ledger control account. ₹6,000. 6,000 रुपए. कैरेज आउटवर्ड आने का कोई कारण ही नहीं वैसे. अगर फिर भी दिया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बिकॉज इट इज ऑन सेल्स पे होता है कैरेज आउटवर्ड. देन वर्क्स ऑन कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑर्डर फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड. एंट्री. वेयर डू यू एब्सॉर्ब द फैक्ट्री ओवरहेड्स? WIP. व्हाट इज द एंट्री? WIP account debit to factory overheads. Factory overheads credit side by WIP control account. बोलो. 1,79,000. WIP debit side to factory overheads
179,000. आया guys? Works expenses, entry for expenses paid. Factory overheads account debit to cost ledger adjustment account. To cost ledger adjustment account. Amount given is 1,40,000. Cost ledger adjustment account by factory overheads. $1,40,000. Got it, guys? Administration expenses paid entry. Administration overheads account debit to cost ledger adjustment account. Administration overheads debit side to cost ledger adjustment account. Amount is 18 na 18,000. Cost ledger adjustment account credit side by administration overheads. बोलो बेटा 18,000. Administration cost allocation to production absorbed. कल का डिस्कशन याद करो. Where do we absorb the administration overheads? Finished goods में absorb करते हैं हम लोग. So what is the entry? Administration overhead charge to finished goods. Finished goods account debit to administration overheads account. Go to finished goods account to administration overheads account. How much is it? 18,400 rupees. Credit side of administration overheads by finished goods account. 18,400. Goods finished during the year 11,72,000. Means this is conversion from WIP to finished goods. What is the entry? Finished goods account debit to WIP account. Finished goods account debit side to WIP control account. How much is it? 11,72,000. WIP credit side by finished goods. 1172. Finished goods sold cost. Cost of sales to finished goods. Go to cost of sales debit side to finished goods. 12 lakhs. Second effect, finished goods credit side by cost of sales. $12 lakhs. $12 lakhs. Then
Selling expenses entry. Selling overheads account debit to cost ledger adjustment account to $13,400. $13,400. Go to cost ledger adjustment account by $13,400. Sales during the year entry. Cost ledger adjustment account debit to sales account. So cost ledger adjustment account debit side to sales account 15 lakhs. To sales account 15 lakhs. Sales account credit side by cost ledger adjustment account 15 lakhs. All the given transactions are over. Now you are just supposed to close the accounts one by one. First of all, we have stores ledger control. क्या मिसिंग है? देखो WIP में जो जाना था वो गुड्स ट्रांसफर हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल भी ट्रांसफर हो गया, तो अब क्या बच गया? क्लोजिंग बैलेंस. हाउ मच इज इट? करो कैलकुलेट. बाय बैलेंस कैरिड डाउन asterisk mark balancing figure. Total is 4,71,000. 4,71,000. Balancing figure is 53, 63, 63,000. Wages tallied. Wages tallied. फैक्ट्री ओवरहेड्स टैली हो गया 1,80,180. WIP क्या मिसिंग है? क्लोजिंग WIP is missing. Buy balance carried down. Total of the account is 12,40,400. 12,40,400. Closing balance is 68,400. आ रहा है सबका? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लास्ट टाइम का अंडर एब्सॉर्ब का बैलेंस 600 था, इस साल का खर्चा 18,000 है, तो ऐसे टोटल 18,600 है, लेकिन एब्सॉर्ब कितने हुए? बोल तो अभी भी अंडर एब्सॉर्ब है 200. तो देखो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो कॉस्टिंग P&L में राइट ऑफ होता है या तो फिर कैरी फॉरवर्ड होता है. बट ऑन अकाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी वी विल कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज लास्ट ईयर का बैलेंस इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ था ना, सो वी विल कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस. बाय बैलेंस कैरी डाउन. ₹200. Finished goods. Closing balance is missing. Buy balance 46.
1246 200. Where do you absorb the selling overheads? Cost of sales में. By cost of sales, 13,400 rupees. Cost of sales debit side to selling overheads. $13,400, and then balance in cost of sales will be transferred to costing P&L by costing profit and loss account. बारह तेरह चार सौ 12,13,400. Go to costing P&L account to cost of sales 12,13,400. 12,13,400. Transfer the sales balance to again costing P&L. So guys, what is the profit? 286,600. Where will you transfer it? Cost ledger adjustment account. Two 600. 15 lakhs is the total. By costing profit and loss account. 286,600. Get the closing balance. करो total. 177. So total will be 1677,800. Got it, guys? Yes. Let's draw trial balance. Trial balance as on 31st March 2021.
Particulars, debit rupees, credit rupees. बोलो लाइन से कौन से अकाउंट में कितना कितना कौन सा बैलेंस है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना? 63. 63,000. Then WIP control account 80. 68. 400. Next, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या है? डेबिट है क्रेडिट है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 200 का डेबिट बैलेंस है ना, तो अंडर एब्सॉर्ब्ड है बेटा, ओवर एब्सॉर्ब्ड नहीं, अंडर एब्सॉर्ब्ड है। खर्चा ज्यादा हुआ है, प्रोडक्शन को चार्ज कम हुआ है। नेक्स्ट, फिनिश्ड गुड्स डेबिट बैलेंस ऑफ 40 46 200. Next, cost ledger adjustment account. Closing credit balance of 177. See that it is tallied. Total 177,800, 177,800. Why does it tally? The simple answer is it is beauty of double entry bookkeeping system. Every transaction is recorded by giving twofold effects. It has to tally. Notes. कुछ नोट्स लिखने हैं इस सॉल्यूशन के अपने को। नोट्स, नंबर वन, under oblique over absorbed overheads, under oblique over absorbed overheads are carried forward from last year to the current year, are carried forward from last year to the current year, full stop, उसी में कंटिन्यू करना आगे। Therefore, on the basis of consistency, current year's under absorbed administration overheads, current year's under absorbed administration overheads are carried forward to the next year. अदरवाइज ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या होता है उसका? कॉस्टिंग P&L में राइट ऑफ कर देते इसको। नंबर 2, नोट नंबर 2, carriage inward, comma, being direct cost on goods purchased, comma, is debited
to stores ledger control account. To stores ledger control account. Full stop. गाइज ये दो बड़े बड़े सम्स हमने सॉल्व किए जिसमें सारे अकाउंट बनाए। पर्पज ये था कि आपको एक इन जनरल आइडिया है कि एंट्रीज कैसे होते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज देके ये क्वेश्चन 12 मार्क 15 मार्क के लिए आएगा, ये चांसेस थोड़े से कम लगते हैं कि तो टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं बोला तो भी इतने अकाउंट बनाओ और फिर पोस्टिंग करो। डिफिकल्ट नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग तो है ना। तो कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स होते हैं हर टॉपिक में, आपने वो देखा रहेगा कि जिसमें फुल फ्लेश्ड प्रॉब्लम पूछने के बजाय पार्ट ऑफ द अकाउंट्स माइट बी आस्क्ड। जैसे इस टॉपिक में जो दो सम्स हमने सॉल्व किए इसमें करीब करीब 10-11 अकाउंट हमने बनाए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाया, राइट। तो अगर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है पेपर को और कम वेटेज के साथ अगर क्वेश्चन पूछना है तो आगे और कुछ प्रॉब्लम्स अपने स्टडी मटेरियल में कवर्ड है, वो प्रॉब्लम्स में से एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि अभी ये थर्ड सम देखोगे आप, इसमें सारे अकाउंट्स नहीं बनाने, जितने जरूरी है उतने अकाउंट बनाने को बोले, फिर भी लगभग बनेंगे एक आध दूसरा छोड़ के उतने ही, बट कुछ यूनिक सम्स है। ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, ये सम्स जो है ना कंपैरेटिवली छोटे सम्स है। दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जितने जरूरी है उतने अकाउंट बनाने हैं। तो लेट्स सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स आल्सो। थर्ड प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर। मटेरियल्स दिया है, मटेरियल्स बोल तो स्टोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, फिनिश स्टॉक दिया है। मटेरियल परचेस्ड, वेजेस पेड इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स इनकर्ड, ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, सेल्स। इतने ट्रांजेक्शंस है। लेट्स सॉल्व। अगर ये दो सम्स अच्छे से दिमाग में गए तो ये सम बहुत सिंपल है फिर तुम्हारे लिए। इट इज वेरी वेरी इजी। सिर्फ कहाँ क्या मिसिंग है ये समझ में आना चाहिए अकाउंट्स क्लोज करते वक्त। पोस्टिंग तो तुम कर लोगे, मेरे को नहीं लगता कि एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम आएगा तुमको, एंट्रीज तुम बराबर करोगे सब पास। सिर्फ एंड में जब अकाउंट्स क्लोज करते ना तो कौन से अकाउंट में क्या मिसिंग है, कहां से कहां क्या ट्रांसफर होना चाहिए, ये समझ में आ गया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। थर्ड सम, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 295। In cost ledger, stores ledger control account, wages control account, factory overheads account,
WIP account. Finished goods account. Cost of sales. Five lines. Sales. Then costing P&L. Costing P&L बनाना पड़ेगा ना. Costing profit and loss account. Finally, that control account called as cost or general ledger adjustment account. Let's start. From the following details show necessary accounts in cost ledger. Materials, it is stores ledger. Go to stores ledger account. Both the balances are given, opening and closing. Two balance brought down.
8,000. Buy balance carried down. $11,000. WIP account. Two balance brought down. What is the opening balance in WIP? 5,000. Buy balance carried down. 9,000. Similar way, finished goods account. Two balance brought down. $10,000. Buy balance carried down. 12,000. Guys, there is hidden adjustment. That is total of debit balances कितना है देखो opening के ये stores WIP और finished goods 23,000. So there has to be opening credit balance of 23,000 in cost ledger adjustment account. अगर वो नहीं लेंगे तो tally नहीं होगा, problem गलत हो जाएगा. You won't get the marks also. तो ये hidden adjustment था कि directly दिया नहीं उन्होंने, but opening के मटेरियल बोल तो स्टोर्स WIP एंड फिनिश गुड्स में अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहना ही पड़ेगा उतना, उसके बाद डबल एंट्री कंप्लीट ही नहीं होता. पहले के दोनों सम्स में दिया हुआ था, यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं है तो लेना पड़ेगा. गो टू कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इज इट? 23,000. वैसे अपन क्लोजिंग बैलेंस भी इसका तुरंत लिख सकते हैं या एंड में बैलेंसिंग फिगर भी उतना ही आएगा, अपन क्रॉस चेक कर लेंगे. ये लिखना है तो लिख दो. बोलो क्लोजिंग क्रेडिट कितना है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंसेस कितने टोटल? 11 और 9 20 और 12 32. तो इसमें क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 32,000 का रहना चाहिए. डेबिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल, टू बैलेंस कैरिड डाउन 32,000. लिखा. नेक्स्ट मटेरियल परचेस्ड एंट्री. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू amount is 25,000. Cost ledger adjustment account credit side by stores ledger control account 25,000. Wages paid entry. Wages account debit to cost ledger adjustment account. Wages account debit side to cost ledger adjustment account. $10,000. Go to cost ledger adjustment account credit side by wages control account 10,000. Out of this 10,000, 2,000 are indirect, means
नहीं, मीन्स रिमेनिंग 8,000 आर डायरेक्ट। ऑब्वियसली जब 10,000 का पेमेंट हुआ है, 2,000 उसमें का इनडायरेक्ट है बोल रहे तो 8,000 डायरेक्ट है। डायरेक्ट कहां जाएगा, बोलो ना एंट्री। WIP account debit to wages control account. WIP account debit side to wages control account 8,000. Wages control account credit side by WIP control account, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो, डायरेक्ट वेजेस। $8,000. Where do you take the indirect wages? Factory overheads, बोलो एंट्री। Factory overheads account debit to wages control account. Wages control account credit side by factory overheads account, bracket indirect wages, $2,000. Factory overheads debit side to wages control account 2,000. Got it guys? Next, overheads incurred entry, क्या एंट्री होगी? overheads incurred, factory overheads account debit to cost ledger adjustment account to ₹8,000. Cost ledger adjustment account credit side by factory overheads $8,000. What is the amount of overheads absorbed? 9,000. क्या एंट्री पास करेंगे? WIP account debit to factory overheads. Factory overheads are absorbed over WIP. So factory overheads account by WIP control account 9,000. WIP debit side to factory overheads 9,000. Sales 50,000 entry. Cost ledger adjustment account debit to sales account. Cost ledger adjustment account to sales account 50,000. Sales account credit side by cost ledger adjustment account 50,000. दी हुई इंफॉर्मेशन तो पूरी हो गई, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके हो गए दिए हुए। अब कहां क्या मिसिंग है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होता तब तक हम आगे जा नहीं सकते। अभी सबसे पहले तो ऊपर जो अकाउंट दिख रहा है स्टोर्स लेजर, थोड़ा सा बेटा केयरफुली देखो। यहां पे क्या मिसिंग है? तो तुम्हारा बोलना है कि सिर्फ इश्यू टू प्रोडक्शन ही है, इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ नहीं है जो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज करते। ठीक है, वो एक पॉसिबिलिटी है। बाकी अकाउंट चेक कर लेते तो और भी क्लैरिटी आएगा। अगर
अगर बाकी सब जगह अगर सब रिकॉर्ड हो गया ऐसे लगता है तो देन मिसिंग इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, सॉरी, डब्ल्यूआईपी को चार्ज किए हुए स्टोर्स, ठीक है, जो गुड्स फैक्ट्री फ्लोर पे ट्रांसफर किए गए। वेजेस तो टैलीड है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्सॉर्प्शन है। डब्ल्यूआईपी में क्या मिसिंग है? डब्ल्यूआईपी में दो फिगर्स मिसिंग है, एक तो स्टोर्स जो ट्रांसफर हुए वो, एंड फिनिश्ड गुड्स में जो ट्रांसफर हुआ वो, ड्यूरिंग द ईयर कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए डब्ल्यूआईपी में से फिनिश गुड्स में शिफ्ट हुए वो। तो डब्ल्यूआईपी तो मैं क्लोज नहीं कर सकता अभी, आई कांट क्लोज। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट की अगर बात करें, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, इसमें भी डबल फिगर मिसिंग है। कौन सी? जो डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए एंड जो फिनिश गुड्स बेच दिए वो मिसिंग है। तो इन शॉर्ट फिनिश गुड्स अकाउंट भी क्लोज नहीं हो सकता। यहां पे भी दो फिगर्स मिसिंग है। इसका मतलब ही ये होता है कि ऊपर जो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट था, देयर द मिसिंग फिगर इज गुड्स ट्रांसफर टू प्रोडक्शन। व्हाट इज द एंट्री? WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। गाइज यहां पे एस्ट्रिस मार्क देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ भी छेपेगा नहीं बाद में। WIP कंट्रोल अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। रह सकते ना गुड्स रिटर्न भी, दिए कहां है प्रॉब्लम में, देना पड़ेगा ना। ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं है, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं है, रह तो सकते हैं ना। इसलिए पहले चेक किया ना अपन ने, नहीं है ना ऐसा कुछ। हाँ, अगले समय आएगा वो भी। बोलो टोटल 33,000। सो हाउ मच इज ट्रांसफर टू WIP? बेटा एस्ट्रिस मार देना भूलना नहीं है। 22,000 go to WIP control account to stores ledger control account 22,000। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? वेजेस तो टैली हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल खर्चा हो गया 10,000, जिसमें से WIP में एब्सॉर्ब हुआ 9,000, तो 1,000 अंडर एब्सॉर्ब्ड है। अब यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड वगैरह हुआ नहीं है पिछले टाइम से, पिछले पीरियड से। आई ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग P&L बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच? 1,000। go to costing P&L to factory overheads 1,000। next अब WIP में क्या मिसिंग है? फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री finished goods to WIP. So by finished goods account, asterisk mark balancing figure. Total is 44 na? Balancing figure is 35,000. Finished goods debit side. नहीं रे, to WIP control account 35,000। टोटल फिनिश गुड्स इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक 45,000 हो गए, उसमें से 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो बचे हुए बेच दिए। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलो बेटा 33,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट साइड टू finished goods
33,000. Transfer it to by costing profit and loss account. $33,000. Costing P&L account to cost of sales, 33,000. Transfer the sales also to costing P&L to costing profit and loss account. $50,000. 50,000. Costing P&L by sales, 50. So what is the profit, guys? And where do you transfer it? To cost ledger, adjustment account, 16,000. Cost ledger adjustment account by costing profit and loss account, 16,000. आपने ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया था तो टैली होना चाहिए, चेक कर लो हो रहा है क्या. अब समझो हम क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखते, बैलेंसिंग फिगर 32,000 आता है एग्जैक्टली. गॉट इट गाइज? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम नहीं? चले आगे. हाँ बोलो. वेजेस, वेजेस अकाउंट. पे कितने हुए? 10,000. उसमें से इनडायरेक्ट था 2,000, बोल तो डायरेक्ट था 8,000. तो जो डायरेक्ट था वो एब्सॉर्ब होता है WIP में, और जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स. बराबर? हाँ क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा. किसके? तो दो इफेक्ट हुए ना, फिर दो इफेक्ट दिए ना. तूने 4 दिए. होते तो दो ही है, दिए भी दो ही है. तेरा डाउट क्या है? मेरे को नहीं समझा. अच्छा नंतर विचारतो. ठीक है नंतर विचार. अगला सम इससे भी छोटा है. फोर्थ सम, 5 ही अकाउंट बनाने के, वो भी प्रॉब्लम में आधे अधूरे दिए है, आधे अधूरे फिगर्स भी दिए हुए हैं. जो मिसिंग है वो ढूंढना है. अच्छा उधर ही सॉल्व करते क्या? नहीं नहीं, फिर ये लेक्चर लेने के जो मेरे को रेमुनरेशन मिलने वाला है वो सब देंगे नहीं ना. हाँ ना, फिर विनोद सर बोलेंगे ऐसा पूरा नहीं सिखाया, तो फिर वो आधा अधूरा पैसे देंगे, वो देंगे ही नहीं. फिर ऐसे कैसे चलेगा भाई, सुशील इंसानों में. फोर्थ प्रॉब्लम, और फिर बाद में डांटेंगे भी मेरे को, बहुत बहुत डरता हूं मैं सर से. और फायर
destroyed some accounting records of a company, you have been able to collect the following from the spoiled papers and as a result of consultation with accounting staff in respect of January 2021. Incomplete ledger entries, raw material accounts, work in progress account, creditors account, manufacturing overheads, finished goods. Additional information. Cash book showed that 89,200 have been paid to creditors for raw material. Ending inventory of WIP included material rupees 5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. The job card showed that workers have worked for 7,000 hours. The wage rate is 10 per labor hour. Overhead recovery rate was rupees 4 per direct hour. You are required to complete the above accounts in the cost ledger of the company. वेरी सिंपल, ये जो 5 अकाउंट बोले उतने से कंप्लीट करना है अपने को. इसमें का भी जो क्रेडिटर्स का अकाउंट है वो बनता नहीं है, सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है. क्रेडिटर्स का अकाउंट देने के पीछे का पर्पज ये था कि अपने को वो फिगर मिले कि गुड्स परचेस कितने हुए. तो डायरेक्ट फिगर देने के बजाय परचेस की उन्होंने क्रेडिटर्स की डिटेल दे दी है. आपने सिंगल एंट्री में क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया रहेगा ना, तो मिसिंग फिगर वहां पे परचेस मिल जाएगा. बस वो पर्पज है क्रेडिटर्स का, बाकी तो वो 4 ही अकाउंट है. दिया ना बेटा क्रेडिटर्स का पेमेंट भी. चल सॉल्व करते अपन साथ में. लिख, सही दिशा में तू लिख. प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 295. In cost ledger, वो जो 5 अकाउंट बोले वही बनाओ 5-5 लाइन के. रॉ मटेरियल अकाउंट बोल तो स्टोर्स है. Then WIP account, then creditors account, next account is manufacturing overheads account.
finished goods account, as I said yesterday that because the solutions are in standardized manner, try कि इसमें एक भी मार्क ना जाए, पूरे मार्क्स इसमें मिलने चाहिए. थैंक यू. पेपर वाले दिन हिचके आनी चाहिए मेरे को. अच्छे रीजन के लिए है. अच्छे रीजन के लिए. हाँ. पेपर वाले दिन यार मत करना क्या क्लास में खड़ा कर दिया बोलना पनिशमेंट दे रहे थे, है ना. नहीं ना. चलो. क्या क्या. हम्म. क्या है ये टॉपिक के लिए सर ने 4 ही दिन दिए ना मेरे को. थोड़ा सा एक आध दिन एक्स्ट्रा रहता तो थोड़ा तुम लोगों से थोड़ी पहचान तो होती थी, जनरल बातें तो हो सकती थी. अब इतना टाइम ही नहीं जनरल बातें करने जितना. 4 ही लेक्चर है ना, 4 लेक्चर में इतने सारे सम्स है. आज के टारगेट में अभी और 2 सम्स है इसके बाद. बोल तो बेसिकली मेरे को बताना ही था और 2 सम्स है इसलिए सब बातें किया. चलो लिखो. लिखो रवि भाई. हाँ. दिए हुए जो फिगर्स है. अच्छा हुडी मैन. हाँ. लिखो. रॉ मटेरियल अकाउंट दिए हुए फिगर्स तो पोस्टिंग कर लेते ना. टू बैलेंस brought down 32,000. Then WIP 2 balance brought down 9,200 है एंड फिनिश गुड्स में कितने कन्वर्ट हुए बाय फिनिश्ड गुड्स. चलो बेटा बताओ. बाय फिनिश्ड गुड्स 1,51,000. हुडी मैन तू यार ऑनलाइन भी फेमस है, बच्चे तेरे बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं. समस्या क्या चल कैसे वो. फिनिश्ड गुड्स अकाउंट 2 WIP अकाउंट. अरे प्लीज बाकी लोगों को कल ही बोला ना, मैं हंसो मत यार, ठीक है ना. प्लीज 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 डोंट लाफ. ऐसे चिल्लाने पे हंसा मत करो. क्या है खिलवाड़ हर एक के साथ होता है. सो प्लीज ना यू शुड नॉट लाफ. प्लीज 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 प्रॉब्लम है थोड़ा समझ के लो. प्लीज डोंट लाफ. नहीं मेरे को सॉरी मत बोलो, उधर सॉरी बोलो जो चिल्ला रहे हैं. कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके. थोड़ा सा कोशिश करो कंट्रोल. हाँ. WIP अकाउंट उनका दोष नहीं है ना रे. 1,51,000 लिखा. यस. बहुत ही प्यारे बच्चे हैं तुम लोग, मालूम है क्या. क्रेडिटर्स अकाउंट
बाय बैलेंस, कोई बात नहीं बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिया हुई है प्रॉब्लम में, जो दिया वही पोस्टिंग करा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। 16,400, थोड़ी देर से आ जाएगा ऑटोमेटिक स्क्रीन, थोड़ी देर पहले भी आया ही था ना वापस। टू बैलेंस कैरिड डाउन, $19,200. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अमाउंट स्पेंट मतलब टू कॉस्ट लेजर cost ledger adjustment account 29,600. $29,600. Finished goods account, to balance brought down, सॉरी मैंने पहले ये इफेक्ट दे दिया WIP, कोई बात नहीं, ठीक है ना, सॉरी बोला ना मैंने, अब क्या जान लेंगे क्या? 1,51,000. To balance brought down 24,000. Buy balance carried down 30,000. $30,000 लिखा. Now cash book showed that 89,200 have been paid to creditors for raw material. Creditors के अकाउंट में जाओ, to payment to creditors, to कैश और बैंक या टू कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मत लिखो यहाँ पे, क्यों तो वो इफेक्ट स्टोर्स अकाउंट के थ्रू जाना है, ये सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है कि परचेस कितने हुए गुड्स, तो वो सिर्फ हम ढूंढ रहे हैं इस अकाउंट के थ्रू। पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना हुआ है? 89,200। So you can find out immediately purchase of goods by creditors account में by purchase of goods asterisk mark balancing figure. Total is 1,08,400. $1,08,400. Balancing figure is, अब मेरे को एंट्री बोलो, गुड्स परचेस हुए उसकी एंट्री क्या होती है? स्टोर्स लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 92,000। आया? Ending inventory of WIP included material 5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. Everybody pay attention here. Closing WIP दिया है जिसपे material cost कितनी incur हुई है? नहीं, material cost 5,000 और कितने hours का काम हो चुका है closing WIP पे? 300 direct labor hours है against wages and overheads. Third adjustment पढ़ो ना,
Job card showed that workers have worked for 7,000 hours and the wage rate is 10 rupees. बोलते 10 रुपए लेबर चार्ज है पर आवर. अब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे कितने लेबर आवर्स का वर्क हुआ हुआ है? 300. तो लेबर कॉस्ट कितनी चार्ज करेंगे डब्ल्यूआईपी पे? डब्ल्यूआईपी पे मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 3,000 रुपए. एंड फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है ओवरहेड रिकवरी रेट वाज 4 पर डायरेक्ट आवर, 4 रुपए. तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे कितने लेबर आवर्स का काम हुआ हुआ है? 300. तो 300 पे ओवरहेड्स रिकवरी रेट कितना? 4. बोलते हो 1,200 रुपए. तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन उन्होंने इनडायरेक्टली दिया है. मटेरियल कॉस्ट कितना? देखो 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 सब लोग मटेरियल में. मटेरियल कॉस्ट कितना? 5,000. लेबर कितना लेंगे हम लोग? कैसे लेंगे? 3,000. 3,000 नहीं, 300 इंटू 10, 3,000. एंड ओवरहेड्स कितने चार्ज करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में? 300 hours into rupees 4. So what will be the value of closing WIP? 7,000, 9,200. 5,000 plus 3,000 plus 1,200. It is 9,200. इसको डिटेल में थोड़ा लिख के बताना पड़ेगा अपने को कैसे आया. बाय बैलेंस carried down. By balance carried down. Look at the screen. रुपीज 5,000 ये मटेरियल कॉस्ट तो है ही, प्लस 300 आवर्स इंटू 10 ये लेबर कॉस्ट, प्लस 300 आवर्स इंटू 4 ये ओवरहेड्स. सो ऐसे वैल्यूएशन कितना आया? 9,200. 9,200 आया. यार क्या हो रहा है यार उस प्रोजेक्टर को? मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा वो बोल देता हूं आपको, वहां से दिखाई नहीं दे रहा है तो. 5,000 प्लस 300 आवर्स इंटू ₹10 ये लेबर, प्लस 300 आवर्स इंटू ₹4 ये ओवरहेड्स. कितना हो गया? 9,200. अब क्लियरली लिखा हुआ है कि 7,000 आवर्स हैव बीन बुक्ड फॉर लेबर. बोल तो हाउ मच अमाउंट इज पेड टुवर्ड्स वेजेस? 70,000 रुपीज, राइट? 70,000. अब अपने को वेजेस अकाउंट बनाने को बोला नहीं था तो हमने बनाया नहीं, राइट? बट डब्ल्यूआईपी में चार्ज तो करना पड़ेगा ना मुझे. टू वेजेस $70,000. To wages 70,000. You may show the calculation in brackets. 7,000 hours into ₹10. 70,000. Correct? Go to manufacturing overheads account. By WIP account. By WIP account. कितने आवर्स काम हुआ है? 7,000 आवर्स. और ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है मैन्युफैक्चरिंग? 4. तो 28,000 रुपए के ओवरहेड्स एब्सॉर्ब हुए. 28,000 रुपीज ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड. WIP debit side to manufacturing overheads. बोलो 28,000 आया. गॉट इट गाइज? दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो कुछ कैलकुलेशंस हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं. अब अपने को एक एक अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या मिसिंग है. सबसे पहले
रॉ मटेरियल मैं क्लोज नहीं कर सकता, तो WIP में कितना कन्वर्ट हुआ है वो मालूम नहीं, डाइवर्ट कितना हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस मालूम नहीं। ऐसा तो है नहीं ना कि क्लोजिंग स्टॉक 0 अज्यूम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो दो फिगर्स मिसिंग है, एक तो स्टोर्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब स्टोर्स ट्रांसफर टू WIP ड्यूरिंग द ईयर, एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो दो फिगर्स मिसिंग है, मैं क्लोज नहीं कर सकता अकाउंट। WIP अकाउंट, WIP अकाउंट में सोचो ना थोड़ा सा, क्या मिसिंग दिख रहा है तुमको? देखो WIP में एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड चार्ज होते हैं, बराबर है। फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्जन आता है, ओपनिंग क्लोजिंग WIP आता है। तो इसमें का क्या मिसिंग है? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो WIP में कन्वर्ट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वही मिसिंग है ना। ऑल रेस्ट ऑफ द फिगर्स आर देयर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, डेबिट, डेबिट साइड चेक करो सब लोग बेटा, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। डेबिट में देखो, वेजेस चार्ज कर चुका हूं मैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी है वो भी मैं यहां पे एब्सॉर्ब कर चुका हूं, तो मटेरियल कॉस्ट ही मिसिंग है ना यहाँ पे। WIP में से कितना फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ वो भी दिया है। सो व्हाट इज मिसिंग इन WIP अकाउंट? Material transferred during the year or consumed during the year. What is the entry for that? WIP account debit to stores ledger control, या यहाँ पे raw material बोल रहे हैं अपन। So to raw material account, asterisk mark balancing figure 53 total 160 200 160 200 go to raw material account by 53,000, बरोबर। अब कैन आई क्लोज दिस अकाउंट? क्या मिसिंग रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस carried down, total is 124,000 71,000 आया, आया। WIP क्लोज हो चुका है, क्रेडिटर्स ऑलरेडी क्लोज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स खर्चा कितना हुआ? 29,600 का खर्चा हुआ। एब्सॉर्ब कितने हुए? क्यों तो रिकवरी रेट दिया था 4 रुपए, 7,000 आवर्स का काम हुआ है, तो 28,000 ही एब्सॉर्ब हुआ है, तो रिमेनिंग इज अंडर एब्सॉर्प्शन। अंडर एब्सॉर्ब क्या करे? वेरी गुड, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट एस्ट्रिस मार्क 1,600, बरोबर है। एंड गाइज फाइनली फिनिश्ड गुड्स में क्या मिसिंग है? जितने बेचे उसका कॉस्ट, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर 1,45,000, total is 1,75,000. Got it? Any problem? Got it, guys? फिफ्थ सम इसी टाइप का है, छोटा सा ही सम है ये भी। देता हूँ ना, होमवर्क भी देता हूँ। आई एम वेरी केयरिंग, यू नो, यू पीपल वांट होमवर्क, आई विल गिव यू। कितने अच्छे बच्चे हैं यार, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं यार। आज होमवर्क तो बनता है, इतना आप खुद की डिमांड कर रहे हैं तो देना ही चाहिए मैंने।
Fifth sum. विनोद सर, नहीं वही तो बोल रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि विनोद सर देते नहीं फिर भी आप लोग होमवर्क मांग रहे हो, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है यार। और इस बात पे मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि 31 मई को पक्का तुम सब लोगों को बहुत अच्छी पार्टी दे सर। हाँ, नहीं नहीं, और इनको तो डबल डबल कुछ खिलाए भाई। प्लीज डोंट लाफ प्लीज, वी शुड नॉट लाफ प्लीज प्लीज। हंसना नहीं चिल्लाने पे, किसी के ऐसे abnormality पे हंसते नहीं बेटा, नको नको। हाँ, फिफ्थ सम, टेक केयर बेटा, गेट वेल सून। द following incomplete accounts, following incomplete accounts are furnished to you for the month ended 31st October 2021. Stores control account, work in progress control account, finished goods control account, factory overheads control account, cost of goods sold account, creditors for purchases. ले creditors यहाँ पे भी आ गए। Factory overheads are applied by using a budgeted rate based on direct labor hours. Budgeted overheads for 2006 is 6,75,000 and ये 2006 वो तो 2021 है, सर को बोलना पड़ेगा करेक्शंस करने को मटेरियल में। 2021 के डिटेल्स है, गलती से 2006 आया है। द बजट ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स इज 4,50,000। The closing balance in the account of creditors for purchases is 15,000 and payments made to creditors in October amounts to 1,05,000. Finished goods inventory at the end is 66,000. Cost of goods sold during the month 1,95,000. On 31st October 2021, there was only one unfinished job in the factory. The cost record shows that rupees 3,000, 1,200 direct labor hours of direct labor cost and 6,000 of direct material cost has been charged. A total of 28,200 direct labor hours were worked in October 2021. All factory workers earn same rate of pay. All actual factory rates incurred in 2021 have been posted. You are required to complete the above accounts. Similar sum है, सिर्फ इसमें कुछ वो पिछले सम में ओवरहेड रिकवरी रेट रेडीमेड दिया था, यहाँ सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने को दिखाना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल सेम सम है, कोई ऐसा अलग कुछ नहीं है। चलो क्विकली लेट्स कंप्लीट दिस सम। Fifth sum, page number 296. In cost ledger, stores control account. Then WIP control account. WIP control account. Then finished goods control account.
finished goods control account. Then factory overheads control account. Next account is cost of goods sold account. Creditors for purchases account. Creditors for purchases account. Let's start. Stores control account. दिए हुए बैलेंसेस का पोस्टिंग कर लेते पहले. Stores control account to balance brought down. To balance brought down amount is 54,000. Then WIP account. To balance brought down 6,000. Finished goods control account. To balance brought down
75,000. Factory overheads total debits बोल तो paid entry to cost ledger adjustment account. Factory overheads account to cost ledger adjustment account. $45,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ब्लैंक है, कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने को ढूंढना पड़ेगा. क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. Additional information. Factory overheads are applied by using a budgeted rate based on direct labor hours. Budgeted overheads for 2021 is 6,75,000 and budget of direct labor hour is 4,50,000. Working दिखाना पड़ेगा अपने को. Calculation of recovery rate. Calculation of recovery rates. Under that A, overhead recovery rate is equal to budgeted overheads divided by budgeted direct labor hours. बजटेड ओवरहेड्स कितने दिए? 6,75,000 and budgeted direct labor hours 4,50,000 है. So rupees 1.5 per hour. बरोबर? ये आया बेटा ओवरहेड रिकवरी रेट, फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवरी रेट आया. फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ो ना, फिफ्थ. On 31st October 2021, there was only one unfinished job in the factory. बोल तो closing WIP है. Cost records show that rupees 3,000, 1,200 direct labor hours of direct labor cost and 6,000 of direct material cost had been charged. Labor cost कितना बोल रहे? Closing WIP पे labor cost कितना बोल रहे? 3,000 रुपए बोल रहे. और कितने लेबर आवर्स काम हुआ है? 1,200 हुआ है. बोल तो पर लेबर आवर वेजेस कितने हो गए? 2.5. आया क्या ध्यान में? इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी हुई है, तो ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद क्लिक होना चाहिए कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में दिया हुआ है कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन करते वक्त 3,000 रुपए का लेबर कॉस्ट लेना है तुमको, और वो 3,000 रुपए की लेबर कॉस्ट में 1,200 घंटे काम हुआ है. बोल तो पर आवर कैलकुलेशन कितना आएगा? जो भी आता है 3,000 डिवाइड बाय 1,200 बोल तो 2.5. बी on the basis of
information of closing WIP on the basis of information of closing WIP labor cost recovery rate is equal to rupees 3000 divided by 1200 आवर्स. ध्यान में आ रहा है ये? सो पर आवर कितना वेज रेट हो रहा है? 2.5 पर आवर. आया? आया? रिकवरी रेट्स आ गए. अब अपन जो पोस्टिंग करने तब कर लेंगे. सेकेंड एडजस्टमेंट, closing balance in the account of creditors for purchases is 15,000 and payment made to creditors is 1,05,000. पहले तो काम करो, क्रेडिटर्स अकाउंट में आके फिगर्स अपडेट करो. टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है? 1,05,000 and to balance carried down 15 ना. फिर परचेस कितना रहेगा? बाय परचेस ऑफ गुड्स बाय परचेसेस. बोलो बेटा, इज इट 90,000? What is the entry for purchase of goods? Stores ledger control account debit to cost ledger adjustment account. Go to stores to how much? 90,000. आया? आया सबका? Then finished goods inventory at the end is 66,000. Finished goods account by balance brought down, carried down 66,000. Cost of goods sold during the month 1,95,000. Entry बोलो ना. Cost of goods sold account debit to finished goods. Finished goods credit side by cost of goods sold. How much? 1,95,000. Go to cost of goods sold to finished goods. $1,95,000. Correct? Correct है? $1,95,000. आया? नेक्स्ट फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट पढ़ो और मेरे को क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन अब आप बताओ, आपको आना चाहिए. क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन बताओ. यस, 10,800. वेरी गुड. कैसे आया? थोड़ा दिमाग लगाओ रे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें. मटेरियल कॉस्ट कितना है दिया है प्रॉब्लम में? व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट? 6,000 है. लेबर कॉस्ट 3,000 दिया है. एंड ओवरहेड रिकवरी रेट हमने ढूंढा ना,
कितना है ओवरहेड रिकवरी रेट? 1.5। लेबर नहीं रे, ओवरहेड रिकवरी रेट 1.5। कितने कितने आवर्स काम हुआ है? 1200 इंटू 1.5 ओवरहेड चार्ज होंगे ना। सो वो कितने आए? 1800। सो 6000 प्लस 3000 प्लस 1800, इट विल बी 10,800। थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा ये अकाउंट में, मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है। WIP में बाय बैलेंस कैरीड डाउन, लुक एट द स्क्रीन। 6000 का मटेरियल कॉस्ट प्रॉब्लम में दिया है, प्लस 3000 का लेबर कॉस्ट भी दिया हुआ है, और ओवरहेड रिकवरी रेट के हिसाब से 1200 घंटे अगर काम हुआ है तो 1200 आवर्स इंटू रुपीज 1.5 हमने वर्किंग नोट बनाया है। देखो तो ओवरहेड्स कितने चार्ज करेंगे आप क्लोजिंग WIP पे? 1800 रुपीज। कितना होगा टोटल? 10,800। आया सबका? एवरीबॉडी गॉट इट? अभी बताने के बाद तो भी समझा या नहीं? नाउ टोटल ऑफ 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड इन अक्टूबर 2021। 28,200 लेबर आवर्स का काम हुआ है। 28,200, 28,200। आई थिंक लाइट गया है ना? नहीं, अब वो बंद करके ही चालू करना पड़ता प्रोजेक्टर। दोनों लाइट लग गए ना उसके। नहीं, सिंगल रेड लाइट है तो ठीक है, डबल आ गया ना लाइट, वो तो वो पहले बंद करना पड़ेगा उसको। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो ना यार, क्या इतना। हर एक का टाइम आता है। 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स। Go to WIP account, debit side to wages account, bracket 28,200 hours into rupees 2.5, बोलो 70,000 पक्का? 70,500 रुपए आया? फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवरी रेट कितना ढूंढा था तुमने? 1.5। WIP अकाउंट डेबिट साइड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, $28,200 hours into rupees 1.5 कितना? 42,300 आया सबका? रुको 42,300 फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट साइड बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 42,300 फैक्ट्री ओवरहेड्स के क्रेडिट में बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 42,300 आया? अब वन बाय वन लेट्स सी क्या क्या कहां मिसिंग है। बेटा स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट में क्लोज नहीं कर सकता यहां पे। एक तो कितना प्रोडक्शन को सप्लाई हुआ है वो मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। WIP में क्या मिसिंग है? फिनिश्ड गुड्स भी मिसिंग है, एंड जो स्टोर से जो गुड्स ट्रांसफर हुए वो भी मिसिंग है। मैं WIP का अकाउंट भी क्लोज नहीं कर सकता।
Can we close finished goods? Yes, yes, yes. WIP converted into finished goods is missing. So finished goods debit side to WIP control account asterisk mark balancing figure. To WIP control account asterisk mark balancing figure. Total of finished goods account is 2,61,000. बरोबर? Missing figure 186,000. Go to WIP account by finished goods. $1,86,000, correct? 1,86,000. Now what will be missing in WIP account? Correct. To stores control account कितने stores ट्रांसफर हुए देखो, asterisk mark balancing figure. Total is 196,800 is the total. So what will be missing figure? 78,000. Correct? Go to stores control account. पांच मिनट बाकी है. 5 मिनट बाकी है. By WIP control account 78,000. Can we close stores control now? By balance? Total is 144,000. बोलो. Balancing figure is 66,000 is the balancing figure. आया? Next account कौन सा है? क्या करें अंडर absorbed है? By costing profit and loss account. How much? 2,700. Cost of goods sold में by costing P&L account. $1,95,000. आया? Creditors तो already tallied है. Any problem guys? Everybody got it? Sixth question बेटा, आप लोग होमवर्क ट्राई करो. सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, उसमें दो छोटे छोटे से पॉइंट्स है. एक तो रॉयल्टी है. रॉयल्टी पेड इज टू बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. रॉयल्टी पेड इज टू बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. और उस प्रॉब्लम में सिक्स्थ में सिर्फ कैपिटल WIP है. तो फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कैपिटल WIP. तो अगर स्टोर्स अगर फिक्स्ड एसेट के लिए इशू हुए तो दैट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल WIP. फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर कुछ एब्सॉर्ब करना है कैपिटल WIP में आएगा. नहीं, ऐसा अलग कुछ नहीं है. ट्राई करो, नहीं तो मैं फिर करा दूंगा आपको. ठीक है? 6 सम. चलो गाइस, सी यू टुमारो. थैंक यू.